अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्राइडल लुक लेके आई हूँ आपके लिए। बारात लुक है विद अ न्यूट्रल लिप, रेड लिप्स नहीं है आज, एंड गोल्ड आई शेडो जो है। So I've got a bridal look with a nudie lip color and gold shimmery eyes. So ये आजकल जैसे लुक्स ना काफ़ी यहाँ पे चले हुए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आइज नहीं, बहुत ज़्यादा बेस हैवी नहीं, मतलब कॉन्टोर वगैरह, मतलब मोर ब्लेंडेड जैसे होता है। मेरी जो ज़्यादातर ब्राइड्स होती है उनको ना दिल करता है कि जैसे हैवी मेकअप हो, लेकिन वो अपना जो उनका लुक है वही नज़र आए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ना हो उनका लुक। सो अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना जैसे पसंद होती है। सो उस हिसाब से मैं अपनी दुल्हन का मेकअप करती हूँ। सो ये वाला बहुत ज़्यादा हैवी बेस भी नहीं है, हालांकि बेस काफ़ी ज़्यादा लगेगा, आप देखेंगे। यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया आई बेस के लिए। इसकी जो आउटर एजेस है आपने ब्लेंड कर देने हैं। ऑल्सो ज़्यादातर जब मैं वीडियोस लगाती है लोग मुझे से शेड्स पूछ रहे हैं। सो शेड्स वगैरह मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, आगे से लगाती रहो। इस वीडियोस में नहीं है, बस मैं नॉर्मली प्रोडक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपको प्रोडक्ट पता हो कि क्या मैंने यूज़ किया है। लेकिन शेड्स आई अंडरस्टैंड कि वैसे कई दफ़ा दिल करता है शेड्स लगाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा दिया बाय द वे सेट करने के लिए आई शेडो से पहले। सो इंशाल्लाह आगे से मैं ट्राई करूँगी कि मैं शेड्स भी वगैरह लिख दूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने डीपॉट कर दिए हैं। सो मैंने उनकी ओरिजिनल पैकेजिंग से निकाल के ग्लिटर्स वगैरह जो शिमर्स है वो निकाल दिया, तो उनके अब मेरे पास शेड्स है ही नहीं है। मैंने अपने तरीके से लिखे थे लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा हो गया सारा कुछ, तो अभी मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा शेड है। सो वो शायद ना हो। यहाँ पे मैंने लाइट ऑरेंज से ब्राउन लिया है, क्रीज लाइन पे लगा दिया, एंड देन यहाँ पे एक डार्क मैट ब्राउन शेडो लेके तो उससे नीचे जो एरिया है वहाँ पे उसको डिफाइन कर दूँगी। So I've gone in with my concealer as an eye base, and then I've added a little bit of powder just to take off the edge of the wetness before I went in with my eyeshadows, because a lot of people sometimes get a bit confused when I don't add powder, and they can't get the blending right. So this will help you get the blending right. I've gone in with the orangey matte brown eyeshadow, then a darker one, and then I'm adding my shimmer eyeshadow. This is actually from Inglot. I went in with like a copper color first, and then a slightly yellowy gold on top. Now, a lot of people ask for shades, and so I will try and put shades on from my next few videos. But a lot of the stuff I've actually depotted, so I haven't actually got the shades of the shimmers and things like that now. So apologies for that. यहाँ पे मैंने शिमर यूज़ किया है। मैंने पहले वीडियो लगाई है कि आपने शिमर्स अपने कैसे यूज़ करने हैं, कैसे आपका जैसे लुक कैसे आता है, क्योंकि एक दो दफ़ा जब आप लगाएंगे तो कई दफ़ा वो पिगमेंट आती नहीं है, तो वो पहले आप वीडियो देख लें कि कैसे आप अप्लाई करते हैं। पहले मैंने कॉपरी शेड लगाया एंड देन उसके ऊपर जैसे थोड़ा सा येलोवी गोल्ड लगा रही हूँ, फिर उठ के आता है। I have got a video that I've added on regarding glitters and shimmers and how to apply them properly so that you actually get them to pop, so please do watch that as well. Going in with a little bit of NYX glitter glue and then a little bit of loose glitter. NYX की glitter glue लगा दी है and then एक fluffy brush से थोड़ा सा जो loose glitter होता है वो लगा रही हूँ। I'm sure ये जो glitter मैं लगा रही हूँ ये मैक का था, लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि एज आई सेड मैंने ये सारे निकाल के ना एक और कंटेनर में डाल दिए, एंड सो इन सब के सब सॉरी अभी कलर्स मुझे हमेशा नहीं पता होता। तो लाइटली इसको टैप करके मुझे एक शिमरी शेड चाहिए था, ज़्यादा ग्लिटर नहीं चाहिए था कि जहाँ पे पूरा आई जो होता है ग्लिटर से कवर हो। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो आउटर कॉर्नर्स पे मैंने लगा दिया, इसको ब्लेंड कर दूँगी। After applying my glitter, I'm just going in with a black eyeshadow and I'm just adding this on like eyeliner and then blending out a little bit. Cleaning up everything and then moving on to skincare. यहाँ पे सारा कुछ हमने साफ़ कर दिया एंड देन नेक्स्ट हमारा स्किन केयर आएगा। नॉर्मली मैंने हाइलोरॉनिक सीरम यहाँ पे लगाया है एंड देन मॉइस्चराइज़र एंड देन जो आपका अगर आपने प्राइमर लगाना है प्राइमर लगा रहे, या आई क्रीम ज़्यादातर मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ इस वक्त, लेकिन हर स्टेप में थोड़ा सा टाइम लगाए और उस प्रोडक्ट को जज़ब होने दें। Just make sure you allow enough time for everything to absorb into the skin, then move on to your base. Using Inglot concealer just to cover up any dark circles or any discoloration. This one's really nice actually, I really like this concealer. I love the way it actually sits on the face. इंग्लॉट का कंसीलर है जिसको मैंने यूज़ करके थोड़ी सी कलर करेक्शन किया है एंड एनी डार्क सर्कल्स उन सबको हटाया है। नाज की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप देखें मैं अप्लाई कैसे कर रही हूँ, काफ़ी थिकली एक लेयर प्रॉपर
पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ एंड देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर दूँगी। नेक पे, नेक लाइन पे सारा आपने जाना है। Applying the NARS foundation, longwear foundation. Now I'm applying this on quite thickly, but it's still not as thick as sometimes I usually do. So it just depends on what kind of look you're trying to achieve. So I'm still painting this on, and I know a lot of people think sometimes, why are we doing this? It's way too much makeup, and I'm saying to you that I normally go even heavier than this. But it is bridal and it is long lasting, and this is what's going to give you the finish that you actually want. So I've added this on as a layer, and then I'm using my beauty blender to tap this away. So just using your damp beauty blender, you're going to keep tapping this out until you're happy with the blend of the base. So beauty blender से आपने tapping motion से इसको blend कर देना है, and then आपने highlighting and अपनी contouring कर लेनी है. तो यहाँ पे मैं Too Faced का concealer use कर रही हूँ lighter shades में, and then जो pink honey है उसका contour कर रही हूँ. So I've gone in with some Too Faced concealers just to highlight, and then I'm going to go in with the pink honey contour. Unfortunately, my camera switched off at that point, so there's how I've actually done my placement. And then I'm just going to blend this out. I actually add on my blusher as well at this time as well. So blusher was Rare Beauty, and I kind of like just put it on in like a circular motion onto the apples of the cheeks at this stage. So blending it out, so I'm blending out the contour first, and then I'm going to move on to the blush, and then I'm going to go to the concealer. So यहाँ पे हमने जो कॉन्टोर है उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा ब्लेंड की जा रही हूँ. दैन मैं अपना जो ब्लश है उसको ब्लेंड कर दूँगी, एंड उसके बाद जो अपना जो कंसीलर है उसको ब्लेंड कर दूँगी. ना नॉर्मली मैं ब्रश के साथ करती हूँ, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप कर सकते हो. तो इस दफ़ा इसको मैंने जो ब्लेंडिंग की थी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से कर दी थी कि आप लोग देख लें. मैं नॉर्मली डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, या डिफरेंट ऑब्वियसली कभी ब्रश कभी ब्यूटी ब्लेंडर, सिर्फ आप लोगों के दिखाने के लिए कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि जो चीज़ मैंने यूज़ की है वो यूज़ करेंगे तो तब ही ठीक बेस होगा या अच्छा लुक आएगा. मेन चीज़ टेक्निक्स होती है, इसलिए मैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ, और ज़रूरत नहीं है कि आपने भी वही चीज़ लेनी है. आप जो आपको सूट करता है उस टाइम पे ले लें. यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ पाउडर से सेटिंग कर रही हूँ. So I've just blended everything away with my beauty blender, and then I'm just adding on a little bit of loose translucent powder from Laura Mercier underneath the eyes and normally around the mouth area. So I'm avoiding the cheek area this time, because that's going to be set with my powder blush. Also, I'm always using different products. I'm always using like different, sometimes I'll use a beauty blender instead of a brush, but it's just to show you that you can actually go ahead and do all this without having to have exactly what I've got in my kit and what products I'm using. It's more you guys focusing onto the techniques and then applying that, and then obviously using the products for whatever suits you, whatever suits your budget, and also whatever is available to you, because not every product is available to everyone, depending on where you live. So I've moved on to the lips. It was just a Huda Beauty lipstick. I don't know the shade, I'm afraid. I will, like I said, is try and note down shades next time. Just make sure at the end you always go over kind of like your glitter, finish off blending the eyes a little bit. Just check that there's, take some pictures, videos, and you can see any mistakes there as well. Go over eyeliner, things like that. एंड पे जब आपने करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो फिनिशिंग टचेज़ होते हैं, थोड़ी सी जो आंखों की ब्लेंडिंग है या आईलाइनर को ठीक करना या ग्लिटर एक्स्ट्रा ऐड करना, वो आपने ज़रूर करना है. उससे ही फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी. एक दफ़ा पिक्चर्स वीडियोस थोड़ी सी ले लिया करेंगे करना, एंड देन उसमें आपकी जो गलती होती है आपको नज़र आ जाता है. कई दफ़ा मैं पिक्चर लेती हूँ, वहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग ओवर लग रही है, या कॉन्टोर की, या थोड़ा सा आई ब्लेंडिंग और ज़रूरत थी. सो इस टाइप की चीज़ें मिस्टेक्स उसमें आ जाती है. ये हमारा फाइनल लुक था. लाइक आई सेड बेस हैवी है, लेकिन इतना भी हैवी नहीं है. लेकिन आगे मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लेके आऊँगी. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि आपको किस टाइप की वीडियोस भी चाहिए. सपोर्ट करते रहे, एंड देन इंशाल्लाह वीडियोस बनती रहेंगी. आई होप you've enjoyed this video. Please do like, share and comment, and inshallah we'll see you soon. Take care. Allah Hafiz.